Good morning, class Earth. Our today's topic is secularism. Secularism is one of the most important feature of our constitution. The constitution states that the state has no religion, that all citizens have fundamental right to follow the propagate their own religion, and that it is the duty of the state to protect life, liberty, and property of all citizens, provide security to them, and enable them to exercise their fundamental rights. इसका means सेक्युलरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी देश का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि इस देश में रहने वाले जो भी लोग होते हैं वह अपने व्यक्तिगत धर्म का अनुपालन करते हैं। और हर स्टेट की यह ड्यूटी होती है, हर कंट्री की यह ड्यूटी होती है कि यह जीवन की, उनके जीवन मूल्यों की, स्वतंत्रता की और सभी नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करें और उनके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने का प्रयास करें। द स्टेट कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कोई भी देश किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। नो कंट्री हैव द राइट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन to any citizen. In many countries, the state favors one particular religion. People belonging to other religion living in that country may face discrimination. There are so many countries like that in which one religion is appropriate, and the people who are belonging to another religion, they are discriminated. After that, directive principles of state policy. Part 4th of our constitution contains guidelines given to the government to ensure the welfare of the people. Under part 4th of the Indian Constitution, it is mentioned as the guidelines to the government to ensure the welfare of the people. These guidelines are called directive principles. Whatever the guidelines given under the section 4, that is known as the directive principles. The importance of these principles can be judged from the fact that the Supreme Court has referred to them as the conscience of the Constitution. It is essential that the government follows these principles in administrative and legislative matters. After that, fundamental duties. Fundamental rights cannot exist in isolation. Fundamental rights never provides isolately. If the Constitution provides us the fundamental rights, then the Constitution of India ensures the fundamental duties for the citizens also. Rights and duties are interrelated. People will understand the value of right only if they are under the obligation to perform certain duties. For this purpose, and 42nd Amendment Act of 1976
added some responsibilities to our constitution called the fundamental duties, which are as given. We should protect the sovereignty, unity and integrity of our country. हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सहिष्णुता को बनाए रखना चाहिए. We should show respect to our national symbol. हमें अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह like the national anthem and national flag, जिसमें नेशनल एंथम आता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडा, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए. There were certain ideals like democracy, non-violence and secularism that inspired our freedom fighters during the national movement. We must respect these ideals and follow them in our daily life. It means that हमारे कुछ निश्चित आइडियल्स हैं लाइक डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, जिनसे प्रेरित होकर के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया था. वी मस्ट रेस्पेक्ट दीज आइडियल्स. हमें अपने इन आइडियल्स का सम्मान करना चाहिए एंड फॉलो देम इन आवर डेली लाइफ, और अपने दैनिक जीवन में इनका अनुसरण करना चाहिए. दैट्स ऑल. टुमारो ऑनवर्ड्स द बुक एक्सरसाइज एंड question answer. So there is the homework to complete the book exercise and tally whenever I will send it.